Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed what is abnormal molecular mass, Van'tHoff factor and degrees of association or dissociation. Now we are going to discuss relation between I means Van'tHoff factor and degree of dissociation. We have calculated the degree of association right here. Now the topic is degree of association relation with Van'tHoff factor I. Let's start. Factor I and degree of dissociation alpha. Dissociation. The degree of dissociation of a substance alpha is defined as the fraction of the total substance that undergoes dissociation. That is, alpha is equal to the number of moles dissociated divided by the total number of moles taken. Suppose one molecule of electrolyte A gives n number of ions on complete dissociation. That is, in general, A dissociates to give n1 moles of B plus n2 moles of C plus and so on, such that n1 plus n2 plus and so on is equal to n. If we start with 1 mole of the solute at equilibrium, we have 1 minus alpha moles of the undissociated molecules and n alpha moles of the ions. Thus, the total number of particles present at equilibrium is equal to 1 minus alpha plus n alpha. This is basically just like the equation of association. Note the points. Or 1 plus n minus 1 alpha. अब जरा समझें, अल्फा मोल्स एन अल्फा मोल्स इसके क्या हुए, डिसोसिएट हुए. अगर अल्फा मोल यहाँ से डिसोसिएट हुए तो यहाँ कितने हुए, मान लो इधर था 1 तो इधर कितना कितना माइनस हो गया अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा रिएक्टेंट में अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इधर कितना हो गया n माइनस अल्फा. तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स इन इक्विलिब्रियम. देखो इन इक्विलिब्रियम समझ में आया. इन इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब फाइनल इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. इसको और थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं इक्वेशन को, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट. वो अल्फा क्या दिखा गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. याद रखेंगे हम लोग डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं अभी. डिसोसिएशन मतलब हुआ कोई ये एक पार्टिकल से कोई बड़ा सा एक पार्टिकल था, उसको आपने सोल्यूशन में डाला यानी एक तरह के सॉल्वेंट में डाला, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके कोई सोल्यूशन बना. सोल्यूशन में ए कुछ पार्टिकल बी बना, कुछ पार्टिकल सी बना एंड सो ऑन, कुछ पार्टिकल और भी कुछ बना होगा. तो कितने पार्टिकल इसको डिसोसिएट हुए उसके डिस्कशन है ये. Substituting the values of the number of particles in the relation, I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association or dissociation. We get I is equal to 1 plus n minus 1 alpha divided by 1. On rearranging, we get alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. नोट द पॉइंट. ये पूरा जो चार्ट आपके सामने है इसको आपको लिखना है प्रॉपरली. सारी चीज़ें यहाँ पर हैं. अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कस द रिलेशन बिटवीन Van'tHoff फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा कंटेंट आपको पता होना चाहिए. बहुत ईजी पार्ट है. सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे. देखें डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों का. Knowing the value of I from the colligative property measurements, the degree of dissociation alpha can be calculated. Let us now solve a numerical problem based on the association property of a solute. याद होगा एसिटिक एसिड एसोसिएट कर जाता है, डाइमर बना लेता है अपने आप को. Acetic acid CH3COOH associates in benzene to form a dimer. 1.65 grams of acetic acid, when dissolved in 100 grams of benzene, elevates the boiling point of benzene by 0.36 Kelvin. Calculate Van'tHoff's factor and also the degree of association of acetic acid. Kb for benzene is 2.57 Kelvin kilogram per mole.
The first step is to list the given variables. W2 is equal to 1.65 grams. W1 is equal to 100 grams. Delta TB is equal to 0.36 Kelvin. Kb for benzene is 2.57 Kelvin kilogram per mole. Molar mass of acetic acid M2 is equal to 60 grams. Van'tHoff's factor I and degree of association needs to be calculated. Let us first calculate Van'tHoff's factor I. Substitute these values in the modified equation for elevation in boiling point. Elevation of boiling point delta TB is equal to I multiplied by Kb multiplied by W2 multiplied by 1000 divided by M2 multiplied by W1. On solving for I, we get Van'tHoff's factor I is equal to 0.5093. Substituting for I in the equation, degree of association alpha is equal to 1 minus I multiplied by n minus 1. बहुत इजी पार्ट है. आप क्वेश्चन देख के अपने आप से क्लियरली समझ जाओगे कि यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन होना है. और अगर आपको पता है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के फॉर्मूले में आई भी है, वैनटॉफ फैक्टर भी है, तो बहुत इजी पार्ट होता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में इनटू आई कर देना है, याद है ना. कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में क्या कर देना, इनटू आई. ये देखो जितना भी फॉर्मूला है उसको इनटू आई कर दोगे. इनटू आई करने से क्या होगा, हमारे पास आई की वैल्यू निकल आएगी. और जैसे आई की वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला पता होता है 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1. सीधे पुट कर देंगे, वैल्यू निकल आ सकता है. ठीक है, इजी पार्ट है. Now, N for acetic acid is 2 as it exists as a dimer. On solving, we get degree of association alpha is equal to 0.98. बिल्कुल इसी तरह हम लोग करेंगे अब डिसोसिएशन के लिए. Let's look. Let us now solve a numerical problem based on the dissociation property of the solute. A solution containing 1.23 grams of calcium nitrate in 10 grams of water boils at 100.97 degrees centigrade. Calculate the degree of dissociation of the salt. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. The first step is to list the given variables. W2 is equal to 1.23 grams. W1 is equal to 10 grams. Delta TB is equal to 100.97 degrees centigrade minus 100 degrees centigrade, which is equal to 0.97 degrees centigrade. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. Molar mass of calcium nitrate M2 is equal to 164 grams. The degree of dissociation needs to be calculated. For finding the degree of dissociation of the salt, we first need to calculate Van'tHoff's factor I. Let me remind, जैसे ही आपको क्वेश्चन में मिले कैलकुलेट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपको अल्फा और आई का रिलेशन देखना है ना. और आई क्या होता है, आई की हर वैल्यू किससे रिलेटेड होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से. यानी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फार्मूला होगा, याद है ना, के बी इंटू एम, जो भी फार्मूला है इसमें इंटू आई कर देना है. के एफ इंटू एम इंटू आई कर देना है. यानी सारे फार्मूले आपको पता होंगे, उसमें आई की वैल्यू रखकर क्या निकाल सकते हो, वैनटॉफ फैक्टर. वैनटॉफ फैक्टर निकलते ही आप क्या निकाल लोगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन. बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस के. देखें, Substitute these values in the modified equation for elevation and boiling point. देखो फिर से आई रखा. Elevation of boiling point delta TB is equal to I multiplied by Kb multiplied by W2 multiplied by 1000 divided by M2 ये तो पता ही है हमें. डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी. याद है ना. अब जरा इसे देखो, ये इतना टर्म क्या है, मोलैलिटी है, राइट. इतना टर्म क्या हो गया, मोलैलिटी हो गई. ये क्या हो गया, के बी हो गया, ये मोलैलिटी हो गया. और मैंने कहा है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वैनटॉफ फैक्टर से कनेक्ट करना है तो क्या करना है, इसके फॉर्मूले से आई से मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या लिखा है, अल्टीमेटली क्या लिखा है, के बी इंटू एम. भाई देखो हमने मल्टीप्लाई किया ना आई से, ये आई हो गया.
डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर सारी चीज़ें निकल आएंगी, केबी भी पता है, मोलरिटी भी काउंट हो जाएगी, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। आपको आई यहाँ से फाइंड आउट करना है। आई फाइंड आउट करने के बाद आपको वो वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ पर। क्लियर, आई के साथ में रख देना है इस जगह पे। ओके, कैलकुलेशन करें फटाफट। Multiplied by W1. On solving for I, we get Van'tHoff's factor I is equal to 2.48. Substituting for I in the equation, degree of dissociation alpha is equal to I minus 1 divided by N minus 1. Now, N for calcium nitrate is 3. डिसोशिएट होगा ना, कितने होंगे? On solving, ये देखो, we get the degree of dissociation alpha is ये देखो कैसे हुए 3, एन की वैल्यू कैसी 3 आई। कैल्शियम नाइट्रेट डिसोशिएट हो रहा है, तो किस में डिसोशिएट हो रहा है, याद रखो, एक कैल्शियम आयन में और 2 नाइट्रेट में। 2 + 1 कितने हो गया, 3 हो गया, राइट। ये 3 वैल्यू आ गई, तो एन की जगह पे क्या आ गया, वैल्यू 3। इजीली निकल आएगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके। equal to 0.74.